नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री ज्ञानज्योत एज्युकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट संचालित श्री दक्षिणामूर्ति विद्या मंदिर यूट्यूब चेनल में हूँ आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी में आपणे सोपान 3 सुधी अभ्यास करी चूक्या छीए। आजे आपणे हिंदी में अंक हिंदी सामे गुजराती अने हिंदी अंक लखता अने वांचता शीखवानुं छे। तमारे पण तमारी नोटबुक में लखवाना छे। यूनिट 53 नीचेना हिंदी अंको अने हिंदी शब्दों ओळखो अने वांचो। नीचेना हिंदी अंको अने हिंदी शब्दों ओळखो अने वांचो। हिंदी अंको अने हिंदी शब्द ओळखो अने वांचो। एक, दो एटले के बे, तीन एटले त्रण, चार एटले चार, पांच एटले पांच, छ एटले छ, सात एटले सात, आठ, नौ एटले नौ, 10, जोईए आपणे आ केवा अंको छे? हिंदी अंको छे। आ हिंदी शब्द छे अने आ गुजराती शब्द छे। तो एक एटले एक, दो एटले बे, तीन एटले त्रण, चार एटले चार, पांच एटले पांच, छ एटले छ, सात एटले सात, आठ एटले आठ, नौ एटले नौ अने 10 एटले 10। हिंदी अंको हिंदी शब्द अने गुजराती शब्द में आपणे लखी लीधा। यूनिट 54 गुजराती अंको सामे हिंदी अंको लखो। नीचेना गुजराती अंको सामे हिंदी अंको लखो। पांच, त्रण, एक ने 7।
6 2 4 9 8 અને 10 આ કેવા અંકો છે? ગુજરાતી અંકો છે. એની સામે આપણે હિન્દી અંક લખવાના છે. તો 5 ને હિન્દીમાં આવી રીતે અંક લખાય, 3 ને આવી રીતે હિન્દીમાં લખાય, 1 ને આ 7 અને 6 2 ને 4 9 અને 8 ને 10. હવે યુનિટ 55 નીચેના ગુજરાતી શબ્દો સામે હિન્દી શબ્દો લખો. ગુજરાતી શબ્દ છે એની સામે આપણે હિન્દી શબ્દ લખતા શીખીએ. 7 2 9 અને 1 4 6 અને 3 10 5 6 હવે આ કેવા હશે ગુજરાતી શબ્દ, એની સામે આપણે હિન્દી શબ્દ લખતા શીખીશું. તો 7 2 એટલે 2 9 એટલે 9 1 4 6 3 એટલે 3 10 એટલે 10 ને 5 આ આપણે થયા ગુજરાતી શબ્દ સામે હિન્દી શબ્દ. હવે યુનિટ 56 નીચેના ચિત્રો ઓળખો અને હિન્દીમાં નામ લખો. અહીંયા જે ચિત્ર છે એની સામે આપણે શું લખવાનું છે? તો કે હિન્દી શબ્દ. તો પહેલું ચિત્ર શેનું છે? કમળનું. તો એને હિન્દીમાં શું કહીએ આપણે? તો કે કમલ. પછી છે બતકનું ચિત્ર, બીજું ચિત્ર ખાંડણી. તો એને શું કહેશું આપણે? તો કે ખરલ. બતક, તો એને શું કહીશ? બતખ. તાળું, તો એને શું કહેવાય હિન્દીમાં? તાલા. કેરી, એને શું કહેવાય? તો કે આમ. ચરખો, હિન્દીમાં શું કહીશું? ચરખા.
बुक एने शू कहीशू तो के किताब। सितार हिंदी में शू कहेवाय एने सितार। હવે યુનિટ 57 નીચેની દીર્ઘ ઈ વાળી હિન્દી બારાક્ષરી વાંચો અને લખો। તો કને દીર્ઘ से की, खने दीर्घ से खी, गने दीर्घ से गी, घने दीर्घ से घी, चने दीर्घ से ची, छने दीर्घ से छी, झने दीर्घ से जी, झने दीर्घ से जी, टने दीर्घ से टी, ठने दीर्घ से ठी, दने दीर्घ से डी, ढने दीर्घ से ढी, अणने दीर्घ से ई, तने दीर्घ से ती, थने दीर्घ से थी, दने दीर्घ से दी, धने दीर्घ से धी, नने दीर्घ से नी, पने दीर्घ से पी, हने दीर्घ से फी, बने दीर्घ से बी, भने दीर्घ से भी, मने दीर्घ से मी, यने दीर्घ से ई, रने दीर्घ से री, लने दीर्घ से ली, वने दीर्घ से वी, सने दीर्घ से सी, सने दीर्घ से सी, सने दीर्घ से सी, हने दीर्घ से ही, क्षने दीर्घ से क्षी, त्रने दीर्घ से त्रि, नने दीर्घ से नी। आ छे हिंदी कको दीर्घ वाळ बरोबर। की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, जी ने टी, ठी, डी, ढी, णी, ती, थी, दी, धी अने नी, पी, फी, बी, भी, मी, ई, री, ली, वी, शी, सी, सी, ही, क्षी, त्रि अने ग्नि। હવે આના આધારે આપણે શબ્દ જોઈએ। નીચેના हिंदी शब्दों वाँचो अने लखो। चीज, बीज, जीभ, खीर, वीर,
લડકી, મટકી, કકડી, ઈમલી, વરદી, તીતલી, બીજલી, શિકારી, ભિખારી, વિધાત્રી। આ દીર્ઘયવાળા શબ્દ છે ચીજ, બીજ, જીભ, ખીર, વીર, લડકી, મટકી, કકડી, ઈમલી, વરદી, તીતલી, બીજલી, શિકારી, ભિખારી, વિધાત્રી। યુનિટ 59 નીચેના હિન્દી વાક્યો વાંચો અને લખો। सीता बर्फी खा। मीता ककड़ी खा। खीर खाकर काम कर। सीता जनक की पुत्री थी। सीता बर्फी खा, मीता ककड़ी खा, खीर खाकर काम कर। सीता जनक की पुत्री थी। હવે હું ગૃહ કાર્ય આપું છું। યુનિટ 54 થી 59 નોટમાં લખો। યુનિટ 54 થી એટલે કે જે અહીંયા આપણે અંકમાંથી હિન્દી ગુજરાતી અંક સામે હિન્દી અંક, ગુજરાતી શબ્દ સામે હિન્દી શબ્દ, આ ચિત્રના જે શબ્દ લખાય છે તે, અને આ યુનિટ 57 થી 59 કક્કો શબ્દ અને વાક્ય જે લખાવ્યા છે તે યુનિટ 54 થી 59 સુધીના નોટબુકમાં તમારે લખવાના છે।